Good morning, third standard students. Today we are going to learn a new subject, that is science. This is your science textbook. In second standard you have learned EVS. But now in third standard EVS subject will be not there. You have to learn science subject. So in science the first lesson is living and non-living things. Living and non-living things. This is the first lesson. Living and non-living things. Living and non-living things. Tell once again, living and non-living things. Living and non-living things, what is the meaning? Living is that can be moved, जो चल सकता है, बातें कर सकते हैं, वो होता है living. Non-living things means table, chair, trees, plants. Here there are some living things and non-living things. Trees is living thing. Sheep is non-living thing. Dog, that is living thing. Chair, non-living thing. Computer, non-living thing. Tortoise, living thing. Now we will read. We see a lot of things around us. For example, colorful flowers, birds, animals, computers, aeroplanes, mountains, and air conditioners, etc. All these things can be divided into living and non-living things. Now, living things. Living things क्या होता है? Living things. Things which have life in them are called living things. इसका मतलब क्या होता है? What is the meaning of living things? The things which are having life. जो भी चीज़ है उसकी जिसके अंदर जान हो उसको living things बोलते हैं. They can grow, breathe and reproduce. Living things क्या है? ग्रो करता है, श्वास लेता है, वो सब दैट इज ऑल कॉल्ड लिविंग थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स. ह्यूमन बींग्स मतलब जैसे हम लोग हैं, मनुष्य है, एनिमल्स है और प्लांट्स, दैट इज ऑल लिविंग थिंग्स. ह्यूमन बींग्स इज human beings, living thing. Animals, here some animals photos are given, that is all. Plants, living thing. Next, features of living things. All living things move. Living things, all living things move. जो भी move करता है वो living things है. Next, living things move from one place to another on their own for food, shelter and safety. Living things move from one place to another place. एक जगह से दूसरे जगह पे वो लोग मूव करते हैं. किसके लिए? For food, shelter and safety. For example, human walks, runs with the help of legs. Humans हेल्प ऑफ लेग्स. जैसे कि ह्यूमंस हैं वो अपने पैर. बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम एंड डॉग्स एंड कैट्स वॉक. इंसेक्ट्स और जो बर्ड्स है वो उड़ते हैं. फॉर नेक्स्ट है फिश है, दैट इज स्विमिंग इन द वाटर. देन डॉग्स एंड कैट्स आर वॉकिंग एंड रनिंग. Here some photos are given.
birds fly, fish swim, horse run, human walks. Though plants do not move from one place to another, they show movement of their parts. Plants जो है वो एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं जाते. Show movement. They show movement of their parts. For example, a sunflower always turns towards the sun. फॉर एग्जाम्पल है जैसे कि सनफ्लावर है वो सन के तरफ ही वो उगता है. द लीव्स ऑफ अ टच मी नॉट प्लांट क्लोज व्हेन दे आर टच्ड. एक टच मी नॉट प्लांट है, जैसे कि हम उसको छूते हैं तो वो बंद हो जाते हैं. सी sunflower is turning towards the sun. Next, touch me not plant. This is touch me not plant. If we are touching, that plant will be closed. Next, all living things grow. जो भी living things है वो grow करता है. कैसे आपको बताती हूँ मैं. शेप. हर लिविंग थिंग्स जब बड़ा होता है तो उसको साइज में और शेप में चेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल, अ लिटिल पप्पी ग्रोज इनटू ए डॉग, ए किटन ग्रोज इनटू अ कैट. सी, फोटो इज गिवन हाउ पप्पी इज ग्रोइंग इनटू अ डॉग एंड किटन ग्रोज इनटू कैट. छोटा पप्पी जब बड़ा होता है तो डॉग बनता है. फिर किटन जो है वो ग्रो होता है तो इट इज कैट. नेक्स्ट, ए बेबी ग्रोज अप टू बी ए बॉय. एक बेबी जो बड़ा होता है तो वो बड़ा बॉय बन जाता है. द बॉय ग्रोज इनटू एन एडल्ट. जब बेबी ग्रो होता है तो बॉय बन जाता है. नेक्स्ट, इफ बॉय ग्रोज इट इज एडल्ट, ओल्ड मैन. इसी तरह ह्यूमन बींग्स में ग्रोथ होता है. नेक्स्ट, a seed grows into a small plant which further grows into a big plant and then into a big tree. एक छोटा सा सीड है वो ग्रो होता है तो स्मॉल प्लांट होता है. आफ्टर दैट इफ स्मॉल प्लांट इज ग्रोइंग इट बिकम्स अ बिग ट्री. टुडे we will learn up to this page only. Next page we will start with next day. So I have written some hard words, new hard words for you. First one is reproduce. What is this? Reproduce. Reproduce. Tell once again. Reproduce. Second is grow. 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 Third is breathe. 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 Tell once again. Breathe. Fourth is shelter. 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 What is this? Shelter. Next is safety. 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 Next is insect. INSECTS. Insects. Next is swim. Swim. What is this? Swim. Next, further. What is this? Further. Okay. Once more. Reproduce, grow, breathe, safety, insects, swim,
further. Do you understand, everybody? Next, fill in the blanks. These hard words you have to write 5 times in homework. How many times? 5 times in homework in science notebook. Next, fill in the blanks. First one is non-living thing do not have life. Once again I will repeat. First one, non-living thing do not have life. Second one, fan is a non-living thing. Again, fan is a thing. Third one, all living things die. Third one, what is it? All living things die. So you have to write down in your science notebook and fill in the blanks. You have to write 2 times homework, and you have to send this homework in our principal sir's WhatsApp. Thank you and have a nice day.